after Prithviraj Chauhan, it kept on getting improved by various other Mamluks and Khilji rulers. Alauddin Khilji also increased the fortification very massively. This bit which you are seeing, आप थोड़ा अंदर आके देखेंगे, this bit is also one part of that fortification which has remained. No? The part of the fort. हाँ? किले की दीवार है। ये लाल कोट की दीवार है। लाल कोट जो So this is one trace. Basically, in the beginning, this wall was only around 3.6 kilometers or 4 kilometers. Later on, till the time Prithviraj came into power, since the threat perception has increased, and it was necessary to have safeguards against these Mongols and Turks and all those. So he had increased this wall to around 8 kilometers, fairly fortified. It is also supposed to be one of the first fortification, proper long fortification in the northern part of India. Though this wall could not do anything, it fell because the battle did not happen here, it happened in Punjab. So, and after that, till the time the Prithviraj Chauhan was there, this was basically a notional capital of India. It was not the capital of India. Rajputs were operating from, especially the Chauhan Rajputs, they were operating from a place called, संस्कृत नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसको आजकल हम लोग सांभर लेक कहते हैं, जहाँ पर सांभर साल्ट, राजस्थान में जहाँ पर सांभर साल्ट की माइंस वगैरह हैं, वो जगह थी जहाँ पर उनका बेसिकली हेडक्वार्टर था. और पृथ्वीराज साहब को खुद अजमेर से बहुत मोहब्बत थी, वो उनका जो ज़्यादातर प्रेजेंस अजमेर में हुआ करती थी. सो 3 इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स वर अजमेर, सांभर एंड रणथंबोर. बट since this was a very important place and central place in India, so for sake of, you can say, the records, it used to be one of the headquarters of Rajputs. ये शहर की दीवार थी कि किले की दीवार? ये बेसिकली उस ज़माने में शहर है, जो गवर्नमेंट किला होता था ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी. ये किले की दीवार थी और किले के आसपास ही छोटा मोटा शहर होता था, ज़्यादातर शहर किले के अंदर होता था. तो we'll talk about किला and Rajputs probably in some. Yeah. So, as I told you, this Sanjay One has got 8 water bodies. One of the water bodies is this. We'll take you inside and also show you. The beauty of this water body is that this is not a male water body. There are traces you will see visibly. Perhaps this was a big hammam, and the kind of architecture it has, our guess is that it was a Turkish kind of hammam. And while some people say through these 2 gates which are there was some underground passage also. I have not been able to find out some passage, but you never know. Currently, all the water bodies which are there, this looks more like an organized hammam. It has got a lot of places where you can get in, and you can see some very beautiful places. This is now one of the most favorite places for blue bulls to come and drink water now. So we'll come inside and we'll see the various leftover remains of the hammam that was there. Hammam is a place where people take bath publicly. Normally there are women hammam for women and hammam for men. So we can't make out because a lot have been lost in this. Like the modern sauna. Hammam is a Persian word. Dahani.
होता ये है कि आप जो कोई जैसा कोई धोबी घाट में आप जाएंगे ना, या हमाम जो चाय पी जो होती हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारे निश होते हैं जहाँ पर यू गो डाउन इन टू द प्लेस एंड टेक बात। सो नॉर्मली बाउली क्या होती है, इसे स्ट्रॉन्ग रेगुलर एक रास्ता होता है, जैसे आपने देखा होगा पुरानी बाउलियों में, इट लीड्स टू अ प्लेस वेयर you have facility to draw water either by bucket by hand or through through your turkey system or anything. Here in this structure you will find at least 5-6 remaining arches. So at a regular interval you will have arches. Now people can safely come with few steps, go down here. See, today because of rains there is a lot of rainy water here, so you are not visible. I saw it on that. अब कौस्तुभी So what you can see, you will go down, you can take a step, you can go take a bath, come back. So you have this. I hope you didn't see your reflections. You got these two are like nearest possible arches, which are like bathing places. You can see there are two very good and very beautiful looking arches, three rather, very clear arches there also. You see those three, they are there. There would have been many, but I think a lot is lost because of this lack of preservation. So at least these three beautiful ones, they are there, they are fairly intact. कौस्तुभी okay. Yeah. And if you see at regular interval, you will find similar, the clusters of stones, which indicate that perhaps there too we had a similar kind of niches where people can go and take a bath, kind of stuff. इसमें भी वो भी होगा ना, अगर हमाम था तो पानी गर्म करने से बच्चे होते हैं। Exactly. पानी गर्म होता है। Actually, they used to heat up water at stone. So because you can't just take bath when it is, उसमें पत्थर गर्म है, उससे पानी गर्म। नहीं, पानी पे आग से। पत्थर हो गई। That is how hammam used to work. Yeah. So it used to have cold as well as hot water. पानी को बॉडी में ही गर्म पानी नहीं नेचुरल बॉडी में नहीं, वी आर नॉट लकी हियर, अभी ओनली कोल्ड वाटर। पानी को गर्म करने की फैसिलिटी होती थी, so with the help of wood and stone and all, they used to warm up the water and they used to create a channel. जहाँ पे आप नहा रहे हैं ना, उस जगह पे कई बार आप बाल्टी से ले जाएंगे, और कई बार जो हाई क्वालिटी के हमाम थे वहाँ पर एक फैसिलिटी होती थी कि ऊपर से, जैसे कभी आप ओल्ड फोर्ट में जाएंगे ना, तो जो वहाँ का हमाम है वहाँ पे आप देखेंगे कि 3-4 चैनल थे, टेराकोटा की पाइपिंग होती थी, उस पाइपिंग से एक तरह से ठंडा वाटर आ रहा है, एक तरफ से गर्म वाटर आ रहा है। या It used to actually be in उसमें channels में flow करता था। So that and they used to create a झरना, तो चैनल बनाने के वो रेगुलर था, चैनल बने रहते थे, it used to keep flowing hot and cold water। फर्क सिर्फ ये था कि वाटर की जो आजकल हमारे पाइप्स होते हैं ना, वो टेराकोटा के बने होते थे अक्सर शुरुआत में ना, तो उससे पानी आता था। लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग आजकल शावर कर लेते हैं ना, इन प्लेस ऑफ शावर देयर यूज्ड टू बी वो झरना काइंड ऑफ बनाते थे, पानी ऊपर से गिरता था और आप नीचे बैठते थे। तो दो तरह की चीज़ें हैं वो, और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इंस्ट्रक्शन यू गिव टू योर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ यू, दे विल ईदर मिक्स इट, प्री-मिक्स इट, और दे सेंड यू सेपरेट स्टीम्स एंड यू टेक बाथ। Not so much because a lot of mud has come here. This is the place where you find highest number of black bulls grazing during the day.